दो जी जरा 700 मुझे। अच्छा, 6 एक्सरसाइज कंप्लीट लिखनी है। उसमें एक तो ये देखो, जब भी हम न्यू पैरा या नेक्स्ट पैरा, एक तो जो स्टार्ट करना है ना, आपने इस तरह ये दो लाइनें लगा लेनी है। जहां से भी स्टार्ट करना है दो लाइनें पहले ही लगा लो इस तरह। उसके बाद जब भी हम न्यू पैरा या नेक्स्ट पैरा बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ आप पहुंचे हुए हैं, मैंने बोला नेक्स्ट पैरा, आपने यहीं से दो लाइनें लगाकर फिर आगे शुरू कर देना है। ये नहीं करना कि नीचे वाली लाइन पर यहाँ नेक्स्ट पैरा बोला तो आप फिर यहाँ कर इस तरह करो, ये नहीं, वहीं से आगे शुरू कर देना है, नई लाइन पर नहीं आना। लेकिन जब लॉन्ग एंड लिखनी है, जहां की आएंगी, इसका मतलब है कि न्यू पैरा है, तो फिर आपने नई लाइन से लिखना है, जिस तरह इंग्लिश में हम लिखते हैं न्यू पैरा, इस तरह लिखना है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक तो आपके पास पेंसिलें दो पेंसिलें हो जो कि दोनों तरफ से शार्प हुई हो। सबके जो दाएं हाथ से लिखते हैं, बाएं हाथ में भी एक पेंसिल होनी चाहिए जो दोनों तरफ से शार्प हो। बाएं हाथ से लिखते हैं, फिर भी दूसरे दाएं हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए जो दोनों तरफ से शार्प हो, यानी कि एट अ टाइम आपके पास चार वो सिक्के हों लिखने के लिए। लिखते हुए जब आप टेस्ट देने जाते हो, जो फर्स्ट टाइम जाते हैं वो घबरा जाते हैं, उनके हाथ से पेंसिल गिर जाती है। वहां पर नहीं होता कि आप उठाते रहें या आप उनको कहें रुक जाएं 1 मिनट मेरी पेंसिल गिर गई है, फौरन दूसरे हाथ की पेंसिल पकड़े लिखना शुरू कर दें। या ये है कि सिक्का टूट जाता है तो फौरन मोड़े पेंसिल दूसरी तरफ से लिखना शुरू कर दें। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा आपको बताया पेज को दरमियान से मोड़ लिया करो इस तरह, इधर दो तरफ, ये रजिस्टर ही आपका गलत है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि खुली लाइनों वाला लो। पेज को इस तरीके से आप पहले ये कर लिए करो, ये इस तरीके से, इससे दरमियान में एक लाइन बन जाती है। ये आधी लाइन पर लिखना होता है। इससे आधी लाइन पर क्यों लिखना होता है कि एक ही जगह पर हाथ रख के आप लिख लेते हो, ये नहीं कि पहले आखिर तक बार बार हाथ आगे रखा इस तरह किया, फिर नीचे आया इस तरह। एक ही जगह रखकर एक ही, जब ये यहाँ आप लिखोगे ना, इस जगह पर पेंसिल से यहाँ एक जगह हाथ रखकर इस तरह, ये देखो एक जगह इस तरह लिखते जाते हो। और जरूरी नहीं है कि लाइन कंप्लीट कर गई, बेशक एक लाइन में 2 या 3 वर्ड लिखो, आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे, ये नहीं कि आखिर पर ये छोटे छोटा फिर तंग करने लग जाओ। ठीक है। बाकी ये होता है कि जब आप यहां पहुंचते हो इस जगह पर, ये आखिरी पोर्शन पे पहले पेज के, होता क्या है कि वहां ये नहीं है कि आपने यहां तक लिख कर ले आना है। जैसे ही वहां जब टेस्ट डिक्टेशन देने वाला फुल स्टॉप बोले या थोड़ा सा स्लो हो, आपने फौरन नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। जरूरी नहीं है कि आप ये सारा एंड तक लिखो, जहां आखिरी 8-10 लाइनों में मौका मिलता है आप अगले पेज टर्न कर लो। मैं यहां भी देखता हूं, जब भी मैं किसी को इस चीज की टेंशन ही नहीं होती, आराम से पेज टर्न कर रहे होते हैं, 10 वर्ड मिस होते हैं, उन्हें तो कोई टेंशन नहीं। मैं देखता हूं इस तरह नहीं काम चलेगा। फौरन एक वर्ड से देखें बंदा रह जाता है, एक वर्ड से, या 1 पेपर देते हैं एमसीक्यूज का, तो एक एमसीक्यूज गलत होता है, बंदा रह जाता है। ये जो केनाल पटवारी की हुई थी अब्दुल अजीज का, 0.25 मार्क्स कम थे, यानी कि एक उसने गलत कहीं कर दिया था। अगर वो ना अटेम्प्ट करता, जो गलत उसने एक किया था, तो वो पास था और उसकी अब तक जॉब हो जानी थी, चांसेस थे बहुत ज्यादा। ठीक है। तो इसी तरह एक वर्ड सिर्फ आपका गलत होगा, एक मिस होगा, आप फर्क। एक तो ये आपको बता दिया, 2 पेंसिलें हो, जब न्यू पैरा या नेक्स्ट पैरा बोलते हैं 2 लाइनें लगा लेनी है। पेज आपने जब भी आपको मिलेगा, ये इधर करते हैं, पहले इस तरह टर्न करना है, फिर इस तरह ये वाला कोना, फिर इस तरह, ये 3 पहले अंदर की जाने, फिर ये बाहर की, ये देखो पहले अंदर की जाने, फिर बाहर की जाने, फिर ये अंदर की, ये इस तरह यहां से उठा रहेगा। इससे क्या होता है कि आप फौरन टर्न कर लोगे, ये ऊपर होगा, फौरन टर्न कर लोगे पेज को। अगर आप नहीं इस तरह करोगे, ये आदत बनाओ डेली, जब मैं लिखवाने लगूं, ये 2 पेंसिलें हो आपके पास, पेज दरमियान से हाफ कर लो, ये पेज को टर्न कर लो, ये भी आदत बना लो। ये कहो कि उस वक्त कर लेंगे याद रहेगा, वहां कोई नहीं याद रहना। इस तरह ये कर लिया करो, वहां ये नहीं कि फिर आप इस तरह करके ये करते रहो, इतना टाइम नहीं होता। जैसे ही 1 सेकंड का 10वां हिस्सा मिले, फौरन टर्न करो, आगे यहां से लिखना शुरू कर दो। इस तरीके से करना होता है काम।
सही तरीके से करो, ये नहीं कि आप बस ऐसे ही खेल बनाए रखो, डेली आया थोड़ा सा काम किया और चला गया, ये नहीं। चलो जी 700 अब 6 कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने लिखवानी है, देख लो तकरीबन 800 वर्ड हैं। कल ये रजिस्टर ना हो आपके पास। कम से कम अभी पेज टर्न कर लो एंड से, अभी कहा है, अभी भी नहीं करना। यहां से आपका पता चलता है कि कितने का आप सीरियस हो। फिर जब बाहर जाते हो कहते हो हमने इतना अरसा लगाया कोई नहीं फायदा हुआ, ये नहीं बताते कि हमने क्या किया है। करो भाई, टर्न कर लो पेज, एंड से मोड़ लो, एंड से। चलो जी लिखो जी। $700 common word exercise number 6. Ready, start. May walked with long and quick steps as she went down the short road that led to the sea. Full stop. Ever since she had spent a week with some relations who lived by the sea in the lovely summer month of June. She had lived for the day when she could return. Full stop. How she had loved the little fishing town and the beautiful blue sea during that week in June. Full stop. How peaceful it had seemed to her after the cares of city life. Full stop. The sea to the limits of the eye had been deep blue, comma, and the water met the land with such a peaceful touch that one hardly heard its sound. Full stop. The ships at rest a little way out seemed not to move, comma, and the white sails of the little ones nearer to the land were still. Full stop. And that was her memory of it all. Full stop. Stillness and peace, comma, blue and white. Full stop. Next para. May remembered also the houses of the people who lived there. Full stop. They were little houses so near together that they seemed in places almost to touch one another. Full stop. Surely, comma, a hand held out from one of those small super windows could meet the hand held out from the window on the other side of that little road. Full stop. Although it was not really a road, comma, she thought. Full stop. A road should be reasonably wide, comma, and the houses should be set well back, comma, and there should be room for motor cars to pass along it. First up, there should be room for people to pass each other without moving to one side
all the other, full stop. No, comma, she could not really call it a road, comma, but it was certainly a place where people lived, full stop. Some of them, like her relations, comma, had lived there all their lives. Full stop. Never had they heard the call of the cities of their own country, comma, and still less had the voice of other countries overseas called to them, full stop. No, comma, for them life had to end where it had begun, comma, and throughout the years they lived in those little, comma, very little houses, comma, lived as people were no longer thought to live in this wonderful land of ours, comma, with its wide streets and modern houses and health services and picture houses. First stop, next para. May had seen the little fishing town and had loved it. First stop, the call of the sea must be in my heart, comma, she thought as she walked once again on the hard city streets where she worked. First up, of course, comma, she told her friend all about it. First up, her friend worked in the same office, and until then they had generally seen eye to eye about the details of life. Full stop. That had been before May went to her relations at the sea for a week. Full stop. She had returned quite changed. Full stop. From then on, her one thought had been to save enough money to take another week with them in the little house in the little fishing town by the sea. Full stop. Of course, comma, the place was about as far away it could be from where she lived, comma, and it meant going without quite a few other things if May was to get the money together. Full stop. But she had done it, comma, and now in the depth of winter, she walked down the road that led to the sea. Full stop. She found that the blue sea of summer had changed, comma, and the water was now almost without color. Full stop. No ships were at rest out there, comma, and that was just as well, for the sea no longer touched the land without sound. Full stop. It threw itself with fearful force upon the stones and headlands, comma, and the sound of its breaking would have overpowered any other sound had there been any. Full stop. But there were no other sounds,
comma, for the town itself was resting, full stop, men could not fish in such weather as this, comma, when the water threw itself up into the air as if trying to overcome the little town that made so much use of it, comma, a town indeed that lived wholly upon what it took from those great waters. First up, next paragraph. Oh, May cried, comma, as he held her body hard against the forces of nature. Full stop. Oh, comma, how wonderful, how truly wonderful. Full stop. Gone was the water color painting of the peaceful blue sea and the sweet little town, comma, and in its place was this great oil painting, comma, this masterpiece of the forces of water and land. Full stop. She was watching the everlasting war between earth and water, comma, that everlasting attempt of one to be the master of the other, comma, an attempt that she hoped would never meet with success. Full stop. Next para. And she loved the sea and the land and the little town more than ever, comma, and she would willingly have spent the rest of her life there, comma, by the fearful and the peaceful sea. Full stop. लिखो जी लॉन्ग एंड। दिलावर आप पढ़ो, ये बंद कर देना, फरवा इसको बंद कर दो।